So, Papa, I think like many discussions that we've done in the past, I thought of having one discussion today. तो बाबा टाइटल तो है नहीं आज मगर आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ लास्ट वीक ये 2 हफ्ते जो है ना these 2 weeks have taught everybody lot of things है ना मतलब क्योंकि एक समय था when we were never not stepping out of home only we were literally confined to our homes मतलब किसी से नहीं मिल रहे थे and so it taught us many things. It taught us resilience. It taught us cooking for those who could not cook. It taught us maybe patience. But बहुत कुछ. So there are a lot of great things that we have imbibed, and बहुत अच्छी चीजें. But one thing, at least I can speak for myself, and I think this will echo with a lot of people, is one thing that I missed dearly in these last 2 years. कि कहीं पे घूमने नहीं जा पाया था. घूमना क्या? But travel as a concept I have forgotten. I consider myself extremely lucky कि I could go to at least visit you and Ma in Jaipur. I am very very lucky. हम लोग दिल्ली में रहते हैं, आप लोग जयपुर रहते हैं. तो same here also. like absolutely नहीं आप लोग तभी कलकत्ते तभी गए थे बीच में. अगर याद कलकत्ते गए थे ना आप लोग जब आप लोग का घर का वो कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ हाँ, ठीक और कलकत्ते गए थे तो मैंने एक सोचा कि आज इसके विषय में बात किया जाए कि why what is this travel bug and why does it excite so many of us. It is like when we ask any person the couple of 2-3 short answers when they say what are your favorite things to do, people either say music or they say reading books, but invariably say I love traveling, right? So I want to discuss today traveling, right? ठीक है बात तो मुझे एक चीज याद है. लेट मी स्टार्ट ऑफ लाइक दिस. आई रिमेम्बर वाचिंग पीकू. ठीक है और पीकू में एक सीन है वेयर अमिताभ बच्चन इज सेइंग टू हिज डॉटर who's played by दीपिका पादुकोण पीकू कि यार मुझे समझ में नहीं आता लोग घूमने क्यों जाते हैं. Because the best sleep that you can have is in your own bedroom. So if that is the case, आदमी घूमने क्यों जाता है? मैंने कहा यार बताया तो गलत नहीं है. Actually, the best sleep that I have is either at Jaipur, at my home, or this house that I live in. But still, the entire concept of घूमना excites me a lot. Let me ask you, very simple. घूमना क्यों पसंद है लोगों को? आपको क्यों पसंद है? अरे लोगों को छोड़िए, आपको घूमना हम अपने बारे में जानते हैं. आप अपना ही बताइए. बहुत दुनिया के बारे में तो उतना जानते नहीं है. आप अपना बताइए. मेरा तो मानना ये है. देखो बहुत घूमने नहीं गए लेकिन बहुत घूमने गए हैं क्योंकि इतना घूमा है अपने जीवन काल में. जी. I have traveled so much, because of my profession and because of this thing, teaching job. Right. I have been assigned different kinds of responsibilities, and because of that, I had to really go here and there in so many places. Right. And but they are all kind of mixed with the professional as well as घूमना. Personal. जी. For me, घूमना, if you are asking me what is a holiday or what is घूमना, it is actually I really want to spend some time unstructured life, In the meanwhile, very well said. अच्छा तो सोच के देखो. If I think of it, I've also not unstructured life means in the sense सवेरे कब सो के उठना है, जब मर्जी सो के उठे. अच्छा शेव किया कि नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता है. आज मैंने शेव नहीं किया जैसे सैटरडे है. और दूसरा ऐसा है कि मुझे मतलब कोई नहीं है मतलब आपके घूमने में कोई बकेट ये देखना है. बहुत फालतू के टेलीफोन नहीं आ रहे हैं. टेलीफोन को कहीं दूर रख दिया है. जानबूझ के सुन नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं. There are many other things and I really enjoy doing that. And there are very different purposes of travel. I'd like to tell you something like when we are talking about unstructured, travel, Tyagi uncle. Yes. He's my very good Quebec. friend. Right. He's from Quebec and all that. So I have visited him several times, Okay. All seasons of Quebec and all.
So Tyagi was very fond of driving, long Okay. distance driving, and he ठीक. will tell from चलो from New York से चलते हैं हम लोग कैलिफोर्निया चलते हैं तेरी. सचदेव से मिलने के लिए. हमने कहा हाँ. इतनी दूर ट्रैवल करोगे, बोले यार मजा आता है. हाँ. And then what happens is that his wife, she hates traveling, ठीक. and she doesn't like at all. Okay. So Tyagi Okay. look forward to whenever I'll go there, हाँ. and Tyagi will take me to different Indian places. travel companion ना आप. Yeah, in travel you. companion, Right. And travel will take me to different. Once I remember, चलो आज पुणे में हम तो चलते हैं सवेरे. हमने कहाँ हाँ. चलोगे? बोले यार चलो चलते हैं, मुझे भी नहीं मालूम कहाँ जाना है. ठीक. वेरी गुड. हम्म. बहुत ठंड थी, अच्छा. चारों तरफ बर्फ पड़ा हुआ था. ठीक. एंड उसने गाड़ी निकाली हम्म. और हम लोग गाड़ी में बैठे, हम और वो, और कुछ खाना वाना कुछ नहीं साथ में. अच्छा. अच्छा. और एक नॉर्थ की तरफ वो चलने लग गया, ठीक. जहाँ कनाडा खत्म होता है बाप. उस तरफ वो चलता चला गया. जहाँ एक चाय वाय की दुकान मिली, कॉफी वॉफी की दुकान मिली, वहाँ चाय हुए, कॉफी वॉफी कुछ खाया हुआ, फिर हाँ. चलते करते हम लोग जहाँ मतलब कहाँ जा रहे हैं ये नहीं मालूम, कुछ नहीं पता, बस चल रहे हैं बस. मतलब चल रहे हैं. और रास्ता ही बहुत साफ अच्छा था. जी जी. चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है, बहुत ही सुंदर था. वो चलाता चला जा रहा है और हम बैठे हुए हैं. ये भी नहीं कि दिन भर की बातें कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं. वो भी, हम भी देखते चले जा रहे हैं, वो भी देखते चले जा रहे हैं. चुपचाप, वो भी चुपचाप. और चलते चले जा रहे हैं, और बीच बीच में भूख लग गई, थोड़ा खाना खा ले रहे हैं. राइट. एंड फिर एक समय आया, फिर हम लोग रात को रुकना पड़ा, तो रुक के फिर सवेरे हम लोग फिर उसी रास्ते से वापस चले आए. अच्छा. ठीक. That is another kind of travel, Actually. I am not very much used to that kind of travel. Right. But I can also tell you, I enjoyed that travel, आपके लिए what makes a perfect holiday? And I'll tell you what I'm trying to understand here. Is it the people whom you're traveling with? Is it the place that you're visiting? Is it the food that you'll be eating, or the place that you'll be staying? है तो बहुत कुछ चीजें इसमें. आपके लिए मैं हूँ खाऊं, कहीं पहुंचूं, सबसे पहले फोकस रहता है खाना, क्या खाना है. बट आपके लिए आई नो ऑल दिस 4 थिंग्स मैटर. अगर पूछे तो ऑल दिस 4 थिंग्स मैटर एंड मे बी मोर, बट टॉप ऑफ द माइंड आपको क्या आता है? देखो, बहुत क्लियर है, चारों चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं. हाँ. चारों का सिग्निफिकेंस है मेरे लिए. अच्छा साथी होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है. कुछ लोग अकेले घूमना पसंद करते हैं. हाँ. और कुछ लोग साथी के साथ घूमना पसंद करते हैं. मैं साथी के साथ घूमना पसंद करता हूँ. लेकिन अगर कभी मुझे मौका नहीं मिला है, अगर मैं अकेले घूमने निकला और रास्ते में कोई साथी मिल गया अच्छा, उसके साथ घूमा, तो वो भी और भी अच्छा लगेगा. लेकिन आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है. ये बात बताइए, बट आर यू ओके विद द कांसेप्ट ऑफ ट्रैवलिंग अलोन? नो, आई एम नॉट. I am not either. मतलब no, I am not. I am not made of that fabric कि मैं अकेले घूमने, मुझे कोई चाहिए. Right. मुझे कुछ अपने तरह के लोग चाहिए जिनके साथ मैं घूमना चाहूंगा. और ज्यादातर मैं घूमने गया हूँ अपनी फैमिली के साथ में. राइट. दोस्तों के साथ में तो दूसरी तरह का घूमना होता है. मुझे अब कहा ना, प्रोफेशनल उसमें गए. राइट. वो सेमिनार अटेंड करने गए, लेक्चर देने के लिए गए, कोई सिंपोजियम अटेंड करने के लिए गए. लेकिन इस तरह से प्लान बना के घूमना मैं कभी नहीं गया हूँ. मैं फैमिली के साथ गया हूँ और 2 मुझे ट्रिप बहुत अच्छे लगे हैं. बताइए. अभी तक. दोनों में, एक में तुमने पार्टली ज्वाइन किया था. हाँ. अच्छा. केरला वाला ट्रिप था. देन यू वर इन बैंगलोर एंड यू वर इन ऑल मीमा एंड कोशाली. आए थे, दिल्ली से आए थे. जी. दिल्ली से आए थे एंड वी वर इन केरला. And you joined us for couple of days. Yeah. 3-4 days. मुनार गए थे हम लोग, याद है हमें? Yeah, मुनार गए थे and all that. That was one very, very good trip. The best thing was the person who was driving us all through Kerala. He was a very nice person, Right. And I still remember that the day we were leaving, उसने कहा, सर इतने दिन हम आपके साथ घूमे हैं, आज आप लोग जा रहे हैं, जो लास्ट डिनर हम लोग साथ करेंगे, एंड आई एम गोइंग टू पे.
that was the best thing, that was the best thing. And I still remember, it was so touching. And we went to a South I Indian feel wedding. touched when you say this story, Baba. Yeah. And I know why you're telling this. Yeah, it was very, very, very good. This And I makes really enjoyed it. traveling. किसी का कोई सरल जवाब नहीं होता, like life. Yes. All this makes life what it is. Yes. And second trip, you were very much a part of the whole thing, was our visit to Jaisalmer and Jodhpur Rajasthan and all trip. that. बहुत And it has very special significance because Jaisalmer, actually, we are so much attached to Jaisalmer because of Sonar Kella and all सोना that. किला. Absolutely. Yeah, ये and बाबा, so, इनफैक्ट आपने ये सोना किला कहा, all our stories somehow कहीं ना कहीं फिल्मों के साथ जुड़ी रहती हैं. Like you said. बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो हर स्टोरी. हमारे इनफैक्ट एक सवाल आपका है पापा, और आप प्लीज उसका कंटिन्यू करिएगा. टू मूवीज दैट आई कैन थिंक ऑफ, बहुत फिल्मों में ट्रैवल है रहा है, बहुत फिल्मों में दो मूवी जो जिसमें ट्रैवल है और बहुत करीब है मेरे लिए, हम सबके लिए, इनफैक्ट हम सबके लिए. एक है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, द अदर इज पीकू. ठीक. एंड द थर्ड वन इज अ बंगाली मूवी. उसमें एक very small fraction of that part is somewhat about travel, is Balasheshe. Right? For people who have not seen it, if they see it, they'll understand what I'm referring to. But I'm assuming most of them who are watching this, they have seen Zindagi Na Milegi Dobara और Piku. बड़ा सवाल ये है कि आप अगर देखें, स्पेशली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हाँ, कि do you feel traveling helps in discovering yourself, mending relationships? Actually, the moment you lead an unstructured life, you discover yourself. Right. When you are leading a structured life, getting up in the morning, taking breakfast, shave, tie लगाया, ऑफिस चले गए, वही फालतू की कुछ काम किया, शाम को चले आए, जाके फिर खाना खाया, right, और ये दवाई लिया और ये हो गया, सो गए. Right. When you are living an unstructured life, you have enough time to think about yourself, and you really, really discover yourself, At least I can tell you, in my spare time, when, for example, when I'm with Bonti or I'm with you, right, when even though when I'm with you, I have some work, but I have a lot of time for myself. Right. We watch films together, we do many things together. Right. And they give me lots of ideas, What is particularly when I'm talking to you and with Bonti and Mais also sitting there, I can tell you, I understand what is relationship. Right. It is, you never get a time to think about these things, A very simple relationship between a father and a son, between a father and a daughter, between a father and a husband and a wife. You really don't think about them. You don't get the time also, perhaps. Yeah, and when you are alone, when we are in a holiday mood, when you are really in a traveling mode and all that, you are really enjoying life. Gee. And then you really, I'm just telling you, they are so kind of fruitful, and I really understand, and they form the basis of my writing. Right. I am not talking only of my this kind of writing. I am talking about my professional writing also. Technical writing. I'm talking about engineering sciences, technology, optimism, and all that. So they are extremely, extremely important, and that is why I always believe in. I wish I could implement it in my lifetime, is 0-hour concept. I have told you several times that before the class starts, or you have 1 hour where we will go without any kind of agenda or plan or agenda and all that. We just go and discuss. There is no teacher, there is no student, and we just start discussing about a particular thing. And you understand yourself. This is the way you have to understand yourself. Right. If you go through a book and you try to understand yourself, you will never understand yourself. You can quote. Beautiful. No, I think what you if you put it on the spot, I completely get it. Now let me ask you one more question.
there are various modes, and I say because we've discussed a lot of things. When you typically tend to travel from Jaipur, Delhi, mostly by car, mostly by car. कभी कभार हुआ तो मतलब प्लेन में आ गए हैं, but otherwise it's mostly by car. Yes. But when we think of travel, primarily the 3-4 modes of travel. एक तो हुआ गाड़ी, एक हुआ ट्रेन, एक हुआ प्लेन, और चौथा हुआ बस. Hmm. 4 मतलब उसका होगा शायद, और मतलब मैं शिफ्ट को कंसिडर नहीं कर रहा, हम भैया उतना नहीं गए शिफ्ट में. इन चारों में से आई नो इट्स नॉट फेयर परहैप्स टू आस्क विच इज योर फेवरेट, बिकॉज इट डिपेंड्स. क्योंकि अब किसी में अगर जयपुर दिल्ली का हो तो गाड़ी का ही आप प्रेफर करेंगे, बट जनरली कोई प्रेफरेंस है क्या? फॉर इंस्टेंस इफ यू आस्क मी पर्सनली, बहुत सालों से किया नहीं है शायद इसीलिए, वॉट एवर, और या फिर बिकॉज ऑफ ऑल द मेमोरीज दैट आई हैव, मुझे ट्रेन का ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है. स्पेशली राजधानी टाइप ऑफ ट्रैवल वेयर वी हैव डन सो मच ऑफ दिल्ली कोलकाता समर वेकेशंस. आपका क्या है? व्हाट इज योर? मेरा सोचने की भी बात नहीं है. अच्छा अच्छा. लाइक मदन मोहन और लता मंगेशकर. ओके, क्या है? इट इज एब्सोल्युटली राजधानी. ओके, अच्छा, ठीक ठीक. एंड देखो, हर राजधानी, हर क्लास में हम ट्रैवल कर चुके हैं. जी 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 जी. और हर क्लास में हमने एंजॉय किया है. एकदम एकदम एकदम. तो राजधानी में ट्रैवल दिल्ली से कलकत्ता, जी जी, और फर्स्ट एसी में कर पाते हो तो बड़ी अच्छी बात है. उसका कारण भी है कि 4 हुए हम लोग. हाँ. 4 जने बैठ के जा रहे हैं. जी 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 जी. बोंटी, तुम, माँ और हम. हाँ 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 बोंटी का सब खाना तुम खा जाते थे. हाँ 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 एंड बोंटी को थोड़ा से ही अच्छा लगता था. हाँ, वो तो एंड माने हम लोगों का ट्रैवल बेस्ट था. माने देयर इज नो माने क्वेश्चन अबाउट इट. बट एज मैंने बहुत हर तरह का ट्रैवल बहुत किया है जी. पहले मैं जयपुर से दिल्ली हर समय बस से जाया करता था. हाँ हाँ हाँ. कानपुर से दिल्ली से कानपुर हर समय ट्रेन से जाया करता था. जी 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 जी. आजकल बाय एयर ट्रैवल करता हूँ. उसके कई कारण हैं. हाँ हाँ. और समय की भी वो होती है, और थोड़ा सा पाबंदी रहती है, सही बात. कन्वीनियंस की हिसाब से और सब तरह से. लेकिन अगर आई हैव अ चॉइस, देन ट्रेन ट्रैवल आई रियली इज द एंजॉय. मोस्ट प्रेफर्ड. Yeah, I don't enjoy the bus travel very much. राइट. I सेम don't. है. एक बात बताऊँ आपको, क्योंकि मैं आपको बड़ी अच्छी जानता हूँ कि ये जो आपने कहा ना कि ट्रेन लाइकवाइज, बट मैंने देखा ये अगर अगर गाड़ी का सफर जो हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने राजस्थान की बात कर रहे थे, that was also a lot of fun. I mean, ये जो है ना जयपुर से उसमें ट्रेन में मजा नहीं है. उसमें ट्रेन में मजा नहीं है. Exactly. छोटे ट्रिप्स है ना, 200 किलोमीटर के, 400 हाँ, किलोमीटर क्विक स्टॉप लिया, चाय पी ली, चाय पी, यहाँ पे पकौड़ी खाई. याद है when we were in Jaisalmer and we wanted to take dinner at some particular place in जोधपुर. रात हो रही थी, तो मैंने हम लोगों ने वहां से ट्रेन उससे गाड़ी से बैठ के कहा, भैया तुम्हारी दुकान तो पूरी बंद हो जाती है, लेकिन हम लोग आ रहे हैं, दुकान खोले रहना. Anybody who is going to जोधपुर next, ये मैं आपने पापा याद दिला दिया. कोई भी जा रहा हो जोधपुर और खाने का शौकीन है और लाल मांस खाने का शौकीन है, ऑन द रॉक्स जाइए. उससे बेहतर लाल मांस कहीं नहीं मिलेगा. तो हम लोग ऐसा था. तो इसलिए दोस काइंड ऑफ थिंग मैंने तुम सिर्फ गाड़ी में ही एंजॉय कर सकते हो. एकदम एकदम एकदम. एवरी मोड हैज हिज ओन पर्पस. एग्जैक्टली. काइंड ऑफ राइट राइट. मैं वही कह रहा था. अब बाबा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इतना घूमना है, देयर सो मच टू सी ऑल ओवर. एक दो जगह जो इंडिया में आप अभी तक नहीं गए हैं, या फिर गए भी हो बट जाने की इच्छा है, और एक दो जो बाहर जो जाने की इच्छा हो. मैं भी शायद बोल दूंगा, या फिर मेरा तो इंडिया में मैं नॉर्थ ईस्ट कभी नहीं गया हूँ. मेरा बहुत शौक है. अच्छा. मेरा नॉर्थ ईस्ट कभी नहीं गया हूँ, और एक आध बार जाने का वो भी हुआ, लेकिन somehow I couldn't make it. ठीक. And one place I really want to visit is, I have never been to Spain. I have been to in many European countries, because I spent a lot of time in Zurich. I've spent a lot of time in Braunschweig and Germany, yes. And then
Paris, and all other places, so many places. But I really have never visited Spain, and I really want to visit Spain. And this is a very nice place. And this again, Thanks to thanks to Zindagi Na Milegi Dobara. the crew from there. हाँ, So so that is a Northeast definitely I have to go. I will definitely go. And these two places, I think, and surprisingly, I want to visit those places which I have already visited many times. exactly. मैं यही कह रहा हूँ. जैसे कि, for instance, अगर मुझे आप पूछें, I would love to do a Australia trip एक बार. Yes. क्यों? क्योंकि I have only heard of Australia stories when I was a month. आप, माँ, मैं, हमें लेके you went, and for almost 1.5 years हम लोग थे. मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि पहली बार गया आपके बदौलत, दूसरी बार गया अपनी बीवी की बदौलत, because दीपा was working in Melbourne for 2 years, तो तब मैं गया. इस बार जाना चाहता हूँ सब एक साथ. आप, माँ, बोंटी पुपा है अमेरिका से, हम यहाँ पे दीपा, मैं, रॉन, रिया, हम लोग, ये बड़ा शौक है. Place that we might have all gone, but we want to go together. Yes. Experience. Yes, that gives you very, very different kind of experience. No, Right. as you rightly say that people go visit places for different reasons. No, there was a time, I can also tell you that when I visited for the first time Switzerland, I was alone. Right. And I got married and went there Right. for more than a year. Yes. And that time I was in Zurich, I was in Paris, I was in Compiègne, Dijon, Toulouse. Most beautiful So many parts of the beautiful world. places. Yeah, beautiful places. But I feel till now, I feel very guilty Right. that I am writing you to your ma that I visited this place, that place, and what she will do. She is here, Right. And and then I decided that when I was in Zurich, then I decided I'll come back. And fortunately, I Gee. got an offer from Melbourne, Yes. and then immediately I came and I went to Right. Melbourne. Right. So it is and sometimes you really need a companion Yes. to enjoy your holidays, enjoy your trip and all that. Absolutely. And that at times I'm saying I really- always need a companion. Yes. So that is why, and I really, these 2 years I have not been able to go anywhere. Right. Before that, I was going every year to Poshali, Right. but now have not been able to go there. I will definitely like to go there. And it's got- again, and that is kind of The optimism is एक pent up जो है, अब once we are allowed, I'm sure we'll start traveling as much as we can. Yes. जहाँ आपने बोला अपने देश में बाहर हर जगह, I'm sure that will follow. Today was fun, Baba. I really, because हुआ क्या है कि इतने दिन से घूमे नहीं है ना, तो even discussions of घूमना makes you feel like you're on a trip. So actually, after discussing with you, now Ah. we have to plan something. we have to plan immediately. something. We have to Exactly. something- And plan whether we are something going soon. to- yeah, wherever we go, we have to go that place, and from there we go to some place. But we have to do this thing. हाँ जी, वो करना है एकदम. It's We will fun. do it before the summer begins. Yes, before the summer begins. Naturally, Absolutely. summer begins, and we will do that. Let us see. I have not planned anything so Right. far. We have not planned anything so far. We will वो definitely like to. आप like you said at the beginning, आप अपना रखिए unstructured. Let me do the planning this time. Yes. ठीक है. So I will do that, and I hope that things will come back to normal. They will. We will travel as much as we used to Right. travel before, Right. and And with the same optimism, happiness, and not with that fear. That's Yes. very important. yeah, fear has to go out. Fear Right. has to go out. Right. Even if fear is there, fear has to go out of the Right. system. Right. Absolutely. बहुत बढ़िया बाबा. Thank you. मजा आ गया आज. It was a lot of Thank you. fun. And to our next discussion and to our next trip. Till then, bye. Okay. Good. Bye. Bye-bye.